to you. You have to go back, right? And यहाँ से इसको मैं पहले पेन करूंगी so that you can have it back. उसके बाद database tool and relationships. You have now two tables. Table 1 को एक मिनट मैं इसको delete कर रही हूँ because it was the default table and we do not need it. अच्छा ये open है इसलिए ये delete नहीं हो रहा. Okay, now it's deleted. Now to make the relationship, go to database tools and relationships and add the two tables in between which you have to create the relationship. Now they have told that the maker code of the maker table should have the relationship with the maker code of the drives table. And what type of relationship? One to many. How to make it? You will drag the primary key to the other key given. ठीक है? Now it's relationship one to many created. ठीक है यहाँ से आपने इसको enforce referential integrity click करना है and then you have to create it, right? One to many relationship has been created, right? This is the way we create the relationship. Then take a screenshot of the relationship and paste it into evidence document. Relationship का screenshot कैसे लेना? You have to double click the line of relationship. This window will be appeared and you will be taking the screenshot of this like this. Okay. This is evidence of relationship and then put it into the evidence file. Are you getting it till now? Create a query using query wizard. Save the name as drives query and select the following fields from this table, drives table. ठीक है? Make sure you, okay, first of all, let's make the query. Following fields तो यहाँ पे उन्होंने mention ही नहीं किया हुआ. Is it in the next picture? एक सेकेंड बच्चा, क्वेरी का इमेज है, आप बताएंगे देख के? आपके टास्क किधर है बेटे? ये टास्क शीट हाँ जी. इज देयर क्वेरी विजिट? इसके बाद कौन सा पेज है? इसके बाद आई नीड टू चेक इट फ्रॉम. दूसरे टास्क शुरू हो जाते हैं और कुछ भी नहीं है? और कुछ नहीं. एक सेकेंड, क्वेरी की फील्ड्स नहीं बताई हुई इन्होंने. लेट मी वेरीफाई फ्रॉम द इमेजेस योर मदर सेंट इट टू मी. दे आर 3 ओनली इमेजेस. एक ये है, आप मुझे वेरीफाई करिएगा. फर्स्ट इमेज मेरे पास ये है आपका, ठीक है? नेक्स्ट इमेज मेरे पास आपका, एक सेकेंड, ये वाला है, ठीक है? नेक्स्ट पेज, ठीक हो गया. और फिर नेक्स्ट पेज आपका ये है. इनके सेंटर में कोई और पेज तो नहीं है? ये आप पिछले वाले लास्ट पेज पे जाएं जो आपने शो किया था. जी जी बस इतना ही है. इतना ही है, ठीक है. चलें, जल्दी से फिर हम बना देते हैं एक क्वेरी. क्वेरी बनाने के लिए यू नीड टू फर्स्ट बी एट होम, ओके, एंड देन यू हैव टू गो टू डेटाबेस टूल. नहीं, क्वेरी बनानी है ना, सॉरी. तो आप क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे, क्वेरी विजिट दिस वन, ओके. इन क्रिएट क्वेरी विजिट you will click and simple query, okay, and then the drives table should be selected from the top and add all of the fields of the drive table. ठीक है? नेक्स्ट, आपको हमेशा सारी फील्ड्स ऐड करनी होती हैं क्वेरी के लिए, राइट? कुछ भी नहीं करना यहाँ पे. नेक्स्ट, एंड इसका नेम यहाँ पे मेंशन है, इट शुड बी गिवन द नेम drives query, drives query, and then finish. क्वेरी बन गई आपकी, ठीक है?
Now, what you have to do, they are saying that in step number 88, make sure to select all the models with maker code should be SE. ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, right click the query, design view, maker code, this one is the maker code, right? So you have to put a criteria over here, right? That it should be containing SE into them. So for containing SE, you will be writing asterisk SE. Okay, run it. Maker code. One second. Maker code पे बोला हुआ है ना उन्होंने, let me verify. Maker code should be SE. हाँ जी. तो यहाँ पे देखें सारे maker code SE वाले आ गए हैं, ठीक है? One criteria has been applied. Then you will go to design view again. The next criteria is suitability should be enterprise and format should be SSD. Suitability. Suitability should be enterprise. For that, let me check that how the suitability is given. It should be enterprise, right? So I will go back to design view and I will write enterprise. Okay, between asterisks, okay? Two asterisks. I will run it and all of the enterprise are selected. Now, format should be SSD. Then I will, this is the format, this. HSD भी आ रहा है, मुझे सिर्फ SSD चाहिए. So I will go back to the design view and I will write SSD over here. I will run it. Oh, sorry, I forgot to put the asterisk design view. SSD in the asterisk. Why it's not coming? मैंने किसी design view. Oh, sorry, I put in the connection. I should be putting it in the format. This is the format. I put in the wrong field. Okay, SSD. I will run it. Only SSD is coming. You can put with or without asterisk as well, but better to put asterisk because it has another complexity in it that I cannot teach you right now because time is very less. ठीक है? Format हो गया? Are you getting it? And the price should be more than 200. And the last is going again. I am in the design view and the price. This is price. Price should be more than 200. Okay, greater than 200. Price is, all the prices are now greater than 200. So this is how we put the query criteria. ठीक है? Evidence, take the screenshot of the query in design view and data sheet view both and paste in the evidence document. तो आप क्या करेंगे? This is the data sheet view. ठीक है, आप इसकी वो ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है सारा. एंड फॉर द डिजाइन व्यू यू विल गो इन द डिजाइन व्यू. ठीक है, तो आपने जहां जहां क्वेरी क्राइटेरियाज लगाए हैं वहां वहां से आप पहले ये पूरा स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर यहाँ से इसको आगे करेंगे, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है. ओके, नाउ दिस इज फिनिश्ड एंड द नेक्स्ट वन इज द लास्ट वन दैट आई ऑलरेडी हैव टॉट यू कि आपने क्या करना है वहां पे. एक मिनट, वो लोड नहीं हो रहा, ये वाला, ठीक है. इसमें कुछ भी नहीं करना, इंपोर्ट करना है और उसकी सारी टाइप सेट करनी है और डेसिमल प्लेसेस सेट करनी है. ठीक हो गया.